ऑडियो चेक 1 2 3 ठीक है। नमस्कार, ये आवाज़ द वॉइस है और मैं मंजीत ठाकुर इस लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही माननीय मेहमान सऊदी अरब के हमारे साथ यहां पर रहेंगे और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी रहेंगे। तो इन दोनों मेहमानों की बातचीत से और यहाँ पर जो संबोधन होगा उससे क्या खास बातें निकल करके आएंगी और कितना अहम है इन दोनों का संबोधन। और अब जो हमारे माननीय मेहमान हैं जिनका आप पोस्टर देख पा रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा, और उनका यहाँ आना, भारत आना कितना अहम है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक हाशमी हैं और आवाज़ द वॉइस उर्दू के संपादक मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हैं। दोबारा इशारा करना भाई। हाँ ठीक है। कैमरा वो वाला ठीक है। हाँ नहीं सब छोटा हाथ दिखा रहे हैं। हाँ ठीक ओके ठीक है ठीक ओके। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम सही दिखा। नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और मैं मंजीत ठाकुर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद सऊदी अरब के हमारे माननीय मेहमान डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किसी यहाँ पर आएंगे और संबोधन देंगे। इन दोनों की यहाँ पर जो संबोधन होने वाला है उसमें क्या खास बातें रहने वाली हैं, उससे क्या संदेश पूरी दुनिया को जाने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। और इस संबोधन से जो खास बातें, जो संदेश पूरी दुनिया को जाएगा, इस निहितार्थ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक हाशमी और आवाज़ द वॉइस उर्दू के संपादक मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हैं। सबसे पहले तो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे समय में अल-इस्सा साहब का इधर आना? ये बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों शख्सियतें ऐसी हैं जो समाज में सद्भावना लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक राष्ट्रीय स्तर पे। इसके अलावा जब भी डोभाल साहब को मौका मिलता है तो वो अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आज मौजूदा दौर में। अगर देश में शांति हो, दुनिया में शांति हो, तो हम तरक्की कर सकते हैं। तो ये दोनों उसी के पैरोकार हैं। एक तरफ जो है हम शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम विकास की बात करते हैं। तो अल-इस्सा साहब जो है वो, उनको कहा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हैं वो, कट्टरवाद के खिलाफ हैं वो। और दुनिया में आतंकवाद और कट्टरवाद जो है ये सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है। तो इनका यहाँ पे आना, इन दोनों का संबोधन, ये वाकई जो है पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर संदेश होगा। और सारी निगाहें इसी तरफ हैं कि वो आज दोनों क्या कहने वाले हैं। फरीदी साहब,
सऊदी अरब की का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में सुना जाता है, कितना अहम रहने वाला है, जैसे कि इन्होंने अभी कहा हाशमी साहब ने। आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें ज़रा सा? मंजीत, ऐसा है कि हम बात करें अगर अलीसा साहब की या हम बात करें डिवाल साहब की, तो मेरे ख्याल में दोनों लीडर्स जो हैं वो अपने अपने लेवल पर सिफारती सियासी काम के अलावा कुछ ऐसा काम करते हैं जो दुनिया जिनको समझती है। वो काम होता है हम मुख्तलिफ मज़हबों के बीच में दूरी कैसे कम करें। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो दोनों ने अपनाया है। बात यह है कि हिंदुस्तान और अरब के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, बहुत कदीम हैं। एक दानिशवर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे एक आदम और हव्वा का रिश्ता है, वैसे ही ये हिंदुस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ है। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। ये ऐसे हमारे सियासी दौरे होते रहते हैं, सिफारती दौरे होते रहते हैं, लेकिन ये दौरा जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का है। ये यहाँ से एक पैगाम देगा अमन का, भाईचारे का, मुख्तलिफ मज़हबों के बीच में पुल बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम हर लेवल पर सियासी पैगाम देखते हैं, सिफारती पैगाम देखते हैं, लेकिन ये दोनों लीडर दुनिया में एक ऐसे साख बनाए हुए हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में हर मज़हब को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल-इस्सा साहब ने मुसलमानों को यहूदियों के दरमियान जो गैप है उसको दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने हर मज़हब के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की है और वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है उसको एक वक्त ऐसा था जब वो रूहानी तंजीम थी, उसका धार्मिक रोल था, लेकिन उस रोल को डाइवर्ट किया गया। उसको रूहानी के साथ साथ उन्होंने समाजी और मजहबी तालमेल के लिए इस्तेमाल किया और उससे उसका दायरा बढ़ता चला गया। तो मेरे ख्याल में वो जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान से जो मैसेज देंगे वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम होगा, पॉजिटिव मैसेज होगा। और वो मैसेज मेरे ख्याल में यही होने वाला है कि हम सब एक होकर चलेंगे तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा अगर हम एक होंगे। हाशमी साहब, अभी हमने देखा कि सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसी सुधार कहूँगा या कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनसे ऐसा लगता है कि एक नए युग की शुरुआत वहाँ पे हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट रास्ता अपनाना, उदारवादी रास्ता अपनाना। उन परिवर्तनों के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अभी जब अलीसा साहब मुस्लिम लीग के महासचिव हैं, बहुत लंबे समय से महासचिव हैं, लेकिन पिछले साल जब उन्होंने हज पे संदेश दिया हाजियों को, तो वो भी एक परंपरा तोड़ने जैसे थे। चूँकि वो काफ़ी लंबे समय से पहले ये होता था कि जो मुफ्ती इमाम हुआ करते थे वही दिया करते थे, लेकिन जब से ये सऊदी अरब ने मिशन 2030 शुरू किया तो उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। और अब ये हो गया 2022 के बाद ये हो गया है कि हर हज पर अब अलग अलग लोग तकरीर करेंगे, तो ये भी एक हिस्सा है। और जब से किंग सलमान आए हैं तब से परिवर्तन हम लगातार देख रहे हैं। और सऊदी अरब ये मानता है कि हमें दुनिया के साथ चलना है, तो चलने के लिए हमें उन सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए आप देखिए कि औरतों को काफ़ी जो है उन्होंने छूट दिया है। और अब तो सऊदी अरब ने ही ये फैसला किया था कि औरतें जो हैं बिना मर्द के भी हज कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा खुलापन है। जब हम सऊदी अरब की बात करते थे तो हमको लगता था कि वहाँ पे औरतों के साथ जो है सो काफ़ी बंदिशें हैं, पर अब वो सब कुछ हो रहा। अभी जो लोग उस पर चांद पे जा रहे हैं लोग, और अभी फास्टेस्ट ट्रेनें जो हैं उसमें जो है महिलाओं को स्पेशल भर्ती किया गया। तो वो सारी योजनाएं जो सऊदी अरब को लेकर थी वो सारी टूटती हुई दिख रही हैं। तो काफ़ी बदलाव आया। और इसमें अलीसा साहब की भूमिका को आप इनकार नहीं कर सकते। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, जाहिर सी बात, जब दुनिया के ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो ऐसे विचार उनके भी काम आ रहे हैं। जब हमारे पास वो आ रहे हैं, या श्रीलंका में जब वसीली और मुसलमानों का जब विवाद हुआ था उसको सुलझाने के लिए भी वो गए थे। तो जब दो कल्चर जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात हम भी कुछ अपना देते हैं, वो भी उनसे भी हम कुछ लेते हैं, लेन देन होता है। तो ये लेन देन का ही सिलसिला है। यहाँ भी जो आए हैं हम भी उनसे कुछ अच्छी चीज़ें लेंगे और हमसे वो जाहिर सी बात है कि वो भी हमारे यहाँ से बिल्कुल, तो वो यहाँ से भी लेके जाएंगे। तो ये जो माहौल बन रहा है, सऊदी अरब ही नहीं पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है। देख लीजिए आप, अगर देखिए तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चेंज हो रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान बदल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किस तरह के परिवर्तन सऊदी अरब में देखने को मिल रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे कदम, सकारात्मक कदम उठाए गए हैं वहाँ पर, और अतिवाद के खिलाफ एक तरह का संदेश सऊदी अरब ने दिया है। नहीं मंजीत, ऐसा ना कि इस्लाम वहाँ पर जो रूल थे
वो रूल हम लोग जैसे यहाँ पर उसको ऑर्थोडॉक्स या दकियानुसी कहते थे, लेकिन उसमें रीजनल असरार ज़्यादा थे। इस्लाम का उसमें उतना दखल नहीं था जितना कि रीजनल होता था। जो रीति रिवाज होते हैं उसकी वजह से वो ढका हुआ छुपा लगता था सऊदी अरब, लेकिन जो इस्लाम का रोशन ख्याल चेहरा है ना वो सामने लाया। उन्होंने जो गलत फहमी थी ना, जो सऊदी अरब के बारे में जो गलत फहमी थी वो दूर करनी शुरू की हैं। एक रोशन ख्याल फेस सामने लेके आए कि देखिए भाई यहाँ सब कुछ मतलब हर एक दायरे के अंदर रह के हम हर काम कर सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन की तरक्की का मामला हो, तालीम का मामला हो। तो उन्होंने वो चीज़ें दूर की और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है मोहम्मद बिन सलमान की, जो प्रिंस है, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसमें उनको बहुत बड़ी मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनको पूरी दुनिया से उस तरह हिमायत भी मिली है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, और उन्होंने न सिर्फ तेल की अपनी जो दौलत थी उसके ऊपर डिपेंड किया, उन्होंने टूरिज्म डेवलप किया। उन्होंने एजुकेशनल सेंटर बना दिया सऊदी अरब को, वहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे कंट्रीज़ के आगे पढ़ें। तो उन्होंने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया है। और ये जो रास्ते खुले हैं यकीनन ये सऊदी अरब को दुनिया के दूसरे मुल्कों के करीब ला रहे हैं, और सऊदी अरब को दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्क की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है, और ये चेंजेस आती हैं वक्त के साथ, ये आ रही हैं और अच्छी चीज़ है। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो औरतों को आज़ादी मिली है, जो भी उनकी पाबंदियाँ ख़त्म हुई हैं, उससे एक जो वर्क फोर्स पैदा हुई है ना। ड्राइविंग सर अब तो स्पेस पे जा चली गई लेडीज, तो अब तो स्पेस पे चली गई, तो वो अब बहुत आगे जा चुकी हैं, हमारी ड्राइविंग की लिमिट से तो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन एक चीज़ था कि जो वर्क फोर्स बना है कि जैसे मान लीजिए ईरान में 30% वर्क फोर्स वहाँ की औरतें थी, तो उस मामले में सऊदी अरब में वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जब औरतें काम करने लगी हैं तो एक वर्क फोर्स जो कंट्री को मिली है वो कहीं ना कहीं तरक्की देगा। तो अब हम सबकी निगाहें रहेंगी कि जब डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा यहाँ आएंगे, अपना संबोधन देंगे, और भारत के सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल केसी साहब यहाँ पर जब बोलेंगे, तो हम ये देखेंगे कि आखिर क्या संदेश यहाँ से पूरी दुनिया को जा रहा है। क्योंकि एक प्रमुख आवाज़ जो है उदारवाद का चेहरा भारत से निकलेगा, और पूरे दुनिया को के मुसलमानों के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब के लोगों को, कि कट्टरपंथ अतिवाद का रास्ता बिल्कुल सही रास्ता नहीं है, और जो उदारवादी चेहरा है, जो विकास का, तरक्की का, शांति का चेहरा है, वो संदेश यहाँ भारत के नई दिल्ली से जाएगा पूरी दुनिया को। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब और फरीदी साहब आपका।
هم وين راحوا؟ لا اثنين، هذا غير واحد هنا. لا لا هناك في هناك محل.
टाइम हो गया, रेडी है तो आइए बाहर, लोगों को बोलिए कि 5 मिनट में। Good morning to everyone. Ladies and gentlemen, on behalf of Khusro Foundation and the India Islamic Cultural Center, I welcome you all in this auditorium, in this historical event. After a few minutes, we are going to receive our dignitaries on the dais. Please have your seats. ख़वातीनो हज़रात, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑडिटोरियम में मैं खुसरो फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जानिब से आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे लिए इंतहाई खुशी का मौका है और तारीख़ी मौका है कि थोड़ी ही देर में आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत, मारूफ इस्लामी स्कॉलर, इज़्ज़त महाब अली जनाब शेख डॉक्टर अब्दुल करीम अल-ईसा हमारे बीच, सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग हमारे बीच तशरीफ़ लाने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की वो मायनाज शख्सियत जो पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है, जिसने अपनी खिदमात के ज़रिए पूरी दुनिया से दादो तहसीन वसूल की है, रिस्पेक्टेड इज़्ज़त महाब श्री अजीत डोवाल साहब, कौमी सलामती के मुशीर बराए हिंदुस्तान, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम आप तमाम मेहमानों के यहाँ आमद पर इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं कि आप वर्किंग डे होने के बावजूद, अपनी अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और डिफरेंट स्टेट्स से चलकर इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके लिए खुसरो फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दोनों आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हमारे बीच नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से आए हुए तमाम मीडिया पर्सन्स का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, जो हमारी आवाज़ को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में ये प्रोग्राम कंफर्म होने के बाद पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू बड़ी बड़ी स्टोरीज हज़रत शेख ईसा साहब के बारे में, हमारे NSA साहब के बारे में, इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस के बारे में कंटिन्यू आ रही है। इससे पहले भी जब इसी ऑडिटोरियम में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच डायलॉग हुआ था, तब भी हिंदुस्तानी और आलमी मीडिया ने एक बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया था और उन्होंने उस प्रोग्राम को देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आज का ये इवेंट भी एक हिस्टोरिकल इवेंट बनेगा, एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम बनेगा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक साथ लाने के लिए और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे आने वाले कल को रोशन करने के लिए एक तारीखी लम्हा साबित होगा। ऐसे लम्हे कौमों की ज़िंदगी में या मुल्कों की ज़िंदगी में या कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी में आते हैं, मगर बहुत कम आते हैं।
हमारे ऑडिटोरियम में इंतहाई अहम शख्सियात, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ स्टेट के नुमाइंदे, मेंबरान पार्लियामेंट से लेकर फॉर्मर मिनिस्टर्स तक, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, बिजनेसमैन, इंटरफेथ एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स, ऑथर्स, राइटर्स, मीडिया पर्सन्स, यानी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह हिंदुस्तान एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और पाई जाती हैं, जहाँ मुख्तलिफ रंग हैं, जहाँ के डिफरेंट कल्चर है, जहाँ की डिफरेंट बोलियाँ हैं, जहाँ डिफरेंट मौसम है, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी डाइवर्सिटी आज इस ऑडिटोरियम के अंदर सिमट आई है कि जहाँ डिफरेंट कलर्स हैं, जहाँ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग इस एक ऑडिटोरियम के अंदर आज मौजूद हैं, जिसमें हर इंसान अपने आप में एक अंजुमन है, हर इंसान अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर इंसान अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जहाँ जहाँ भी सीट्स खाली हैं प्लीज़ उनको पुर कर लीजिए। जो बाय नेम एलोकेटेड हैं उसको खाली रहने दिया जाए, और जो विदाउट नेम हैं सीट्स, तो जो लोग खड़े हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है नीचे कॉन्फ्रेंस रूम 1 के अंदर भी, और उसके नीचे बैंक्वेट हॉल के अंदर भी। तो जो लोग आ रहे हैं उनको हमारे वॉलंटियर्स नीचे बैंक्वेट हॉल में और कॉन्फ्रेंस रूम 1 की तरफ डाइवर्ट कर दें प्लीज। जितने डेलीगेट्स हमारे ऑडिटोरियम में हैं, ये हमारे लिए फख्र और खुशी का मौका है कि उससे ज़्यादा डेलीगेट्स हमारे दूसरे हॉल्स में, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल 1 के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल 2 के अंदर और नीचे हमारे बैंक्वेट हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। हेलो भाई, आपका पास 11:30 के बाद एंट्री हो गई है, फिर भी वहाँ नौशेरवा हाई है, एक लड़का शानू उसके पास है 5 नंबर गेट के ही आसपास में। मैं आपका पास बनवाया हुआ है स्पेशल उनको कहिए आप मीडिया से हैं, वो नौशेरवा करा देंगे आपको हमारे लोग। उनको भेज रहा हूँ, नौशेरवा भाई हैं 5 नंबर गेट पर बोल देंगे।
हेलो 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 नौशीर Ladies and gentlemen, our dignitaries, His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League, and His Excellency Shri Ajit Dival KC, National Security Advisor of India, are going to be arrive shortly. हम काइंडली कोऑपरेट, हम ये कोशिश करें कि अगर लेडीज़ खड़ी हुई हैं या सीनियर सिटीज़न खड़े हुए हैं तो जो लोग पीछे की साइड हैं वो उनको अपनी सीट ऑफ़र कर दें और उनको प्लीज़ बैठने दें। This is the historical moment we are going to witness, and to impart the message of peace and harmony, not only to the Indian but to the international community. I remember a beautiful couplet of Urdu that मौजे सफ़र के साथ हवा का मिजाज है, खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। थोड़ी ही देर में हमारे जो डिग्नेटरीज हैं वो ऑडिटोरियम के अंदर होंगे।
Ladies and gentlemen, our dignitaries are arriving shortly. इंतजार के लम्हात कुछ ही मोमेंट में खत्म हुआ चाहते हैं. Thank you. Ladies and gentlemen, please take your seats as our dignitaries are arriving shortly. It's taking only few moments. They are in the premises. How beautifully we described in Urdu poetry. आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में. Volunteers, please allow our delegates to come to the auditorium. उनको अभी सबको नीचे मत भेजिए, बल्कि ऑडिटोरियम में आने दीजिए. अभी हमारे पास ऑडिटोरियम में स्पेस है थोड़ा सा.
भट्ट साहब के बाजू भट्ट साहब के बाजू They are arriving in any moment. Thank you. Only 2 minutes to go. We have member of parliaments, former ministers, former judges, former chief of election commission of India, former bureaucrats, leading doctors, professionals, leaders of different faith organizations, interfaith activists, social workers, renowned businessmen, renowned academicians, vice chancellors, professors, Arabic and Islamic studies scholars from different parts of the country. One more minute to go. Please be seated. Please be seated. जहां भी जिसको जगह मिले, प्लीज हम कोशिश करें कि हमारे कोई आलिम दीन, कोई रिलीजियस लीडर, बाबा, पंडित जी, खवातीन जो भी हों वो खड़ी हुई नजर ना आए, उनको प्लीज सीट दें. सीनियर सिटीजन्स, नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में भी प्रोजेक्टर लगा है, बैंक्वेट हॉल में भी लगा है. सेम प्रोग्राम यू कैन वॉच इफ यू सिट देयर. ऑडिटोरियम फुल हो गया है. बाकी लोगों को वॉलंटियर्स नीचे बैंक्वेट हॉल में और कॉन्फ्रेंस हॉल 1 की तरफ डाइवर्ट करें प्लीज. Ladies and gentlemen, let's welcome His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League, India. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am very happy to announce that our esteemed dignitaries, His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League, and His Excellency Shri Ajit Dival, National Security Advisor of India, have arrived. I request the dignitaries, His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League, and His Excellency Shri Ajit Dival, National Security Advisor of India, to kindly take their seats on the stage, please. Please. His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League, His Excellency Shri Ajit Dival, Kirti Chakra, National Security Advisor of India, respected members of the delegation accompanying His Excellency Dr. Al-Issa, worthy ambassadors, distinguished religious and community leaders, vice chancellors, academics,
members of media, ladies and gentlemen, on behalf of Khosrow Foundation and India Islamic Cultural Center, it's my proud privilege to welcome you all to today's historic event. We are honored to have you all here today for this special occasion. It is our proud privilege to have amongst us today His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, a world-renowned Islamic scholar and jurist. During his tenure as Saudi Minister of Justice, Excellency oversaw key reforms in several areas, including legislative reforms in family matters, humanitarian cases, and for the right of women. Dr. Al-Issa has a PhD in comparative judicial studies. As the Secretary General of the Muslim World League since 2016, Dr. Al-Issa has spearheaded initiatives to build partnership and strengthen relations between diverse communities, faith, and nations. He also served as the chairman of the Center for Responsible Leadership. It is worth mentioning that many global figures have held Dr. Issa's work. Cardinal Dolan, Archbishop of New York, referred to Dr. Al-Issa as the most eloquent spokesperson in the Islamic world for reconciliation and friendship among the religions of the world. The granddaughter of Nobel laureate Nelson Mandela has praised Dr. Al-Issa as a remarkable voice of Muslim tolerance and moderation. As an extraordinary gesture, Dr. Al-Issa led a delegation to the Auschwitz concentration camp in Poland to mark the 75th anniversary of the camp's liberation from Nazis. He also delivered the Hajj ceremony from the pulpit of Masjid Nimra to advocate a moderate message of Islam, promoting harmony and compassion. Muslim World League, under his guidance, has denounced the idea of inevitable clash of civilizations due to religious issues. The Charter of Mecca in 2019, endorsed by 1,000 religious scholars representing 128 countries, supported efforts to counter extremism and promote religious and cultural diversity, tolerance, and legislation against hate and violence. Dr. Al-Issa has received a number of awards and recognition, including the Galileo International Award in 2018. Besides being figured in the Muslim 500, the world's most influential Muslims. Now I request His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League to India, to kindly address the gathering, please. Thank you so much. Thank you. معالي السيد دوفال مستشار الأمن القومي، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أسعد بكم في هذا اللقاء وفي هذا المركز، مقدرا الدعوة الكريمة من لدن قيادة هذا المركز الثقافي والحضاري من أجل تعزيز تواصلنا الثقافي والحضاري حول العالم. No voice? Good. His Excellency, Mr. Doval, Advisor of the Secretary Council, His Excellencies, Eminencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here
and appreciate the kind invitation from this cultural center and to further promote our relationship culturally and on the civilizational level. نحن نقدر التاريخ العريق للهند، التاريخ الثقافي والحضاري، ونؤمن بأهمية التواصل مع هذا التاريخ في عالمنا الإسلامي، ونقدر أيضا على وجه الخصوص التنوع الإيجابي في جمهورية الهند، هذا التنوع والذي عزز من مفهوم التعايش من خلال الوعي الذي تتمتع به الحكمة من لدن هذا التعايش. We appreciate the great and long history of India, and we appreciate the diversity that is there in India, and we believe in the necessity of establishing communication and outreach with this diverse culture in India. We also appreciate the positive coexistence that exists within this diversity, and how this diversity further promotes the good relationship between the different cultures. في هذا العالم التنوع منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، هذا التنوع هو حتمي وهو أيضا طبيعي، ولا بد أن نستوعب هذا التنوع. عندما نستوعبه استيعابا صحيحا عندئذ نسلك مسلكا صحيحا من خلال الوعي الذي لدينا. Of course, this diversity, it's been on this earth from the very inception. We must appreciate this diversity, and we understand it that this diversity is an unavoidable part of life. If we understand it in such a manner, then we will be able to approach it very positively. يختلف الناس في أديانهم، يختلفون في لغاتهم، يختلفون في ثقافاتهم، يختلفون في أفكارهم، يختلفون في مفاهيمهم التحليلية نحو الأفكار، ولكن هذا الاختلاف هو شأن طبيعي، طبيعة البشر، وهذا التنوع بين البشر أثرى الإنسانية عبر تاريخها، ويجب أن يفهم هذا التنوع على أنه ثراء إنساني. هنا الوعي، هنا النقلة النوعية للبشرية نحو صالحها في ازدهارها وسلامها. Of course, diversity exists in many colors and forms. We have diversity in languages, in ethnicities, in thinking, and how we analyze our thinking. Diversity is a natural part of humanity, and we should look at it as a source of enrichment. If we start looking at diversity as a source of enrichment, then there will be a shift in our thinking, a leap forward. وأيضا we all know unity in diversity. Yes, you're asking. Yes. والوحدة كما ذكرنا قبل قليل هي في التنوع. نعم، الوحدة في التنوع. Yes, as I said, unity in diversity. ولا بد أن ندرك ذلك على أرض الواقع، وليس مجرد كلمات أو محاضرات أو نظريات أو مفاهيم نجعلها في الكتب، ولكن يجب أن تكون أمرا واقعا فعلا الوحدة في التنوع. And we should not have this concept only in textbooks or in speeches. We should apply it on the ground. It should become something palpable on the ground, and never leave it as just a concept unutilized. لدينا في منظمتنا، وهي منظمة دولية، عدد من الأصدقاء وعدد من الحلفاء من جميع الأديان ومن جميع الثقافات حول العالم، ونعتز بهذه الصداقة وهذا الحلف وهذا التعاون المشترك مع الجميع. In our organization, which is an international independent organization, we have alliances and friendship with different faiths and cultures of the world, and we are proud of this fact, and we continue to strengthen these relationships. ولدي أيضا على وجه الخصوص بصفتي
أمينا عاما لهذه المنظمة، أصدقاء متنوعون في جمهورية الهند من جميع التنوع. لدينا أصدقاء قريبون جدا نتعاون معهم، حتى أيضا من إن شئنا قلنا من الجالية الإسلامية أو أيضا من الجالية الهندوسية، وهم متعاونون معنا بل وشركاؤنا في هذه المنظومة، وهي منظومة رابطة العالم الإسلامي، والتي تعنى بتصحيح المفاهيم وأيضا بتعزيز الوحدة الإنسانية من أجل وئامها الوطني ومن أجل سلامنا العالمي. Especially me as the Secretary General of this independent organization, I have friendship from diverse communities here in India, be them from the Islamic side and also from the Hindu community. And they are not just friends, but they are partners with whom we cooperate. Within the Muslim World League, it's in our principles that we work on rectifying and presenting the true image of the faith so that we can further strengthen the relationship with the different faiths of the world. ونتبادل الزيارة مع هذه المكونات المتنوعة. لدينا أصدقاء من ذلك التنوع، لدي في الهند أصدقاء فاعلون كبار، حتى أيضا من المكون الهندوسي وهو يمثل الأغلبية. نحن نعلم أن الأغلبية في جمهورية الهند هي الأغلبية الهندوسية، ولذلك مع أن الدستور الهندي هو دستور علماني لأجل أن يجمع هذه المكونات تحت مظلة واحدة، لكننا نؤمن بأن أيضا المكون الأغلب هو مكون من الديانة الهندوسية. ندرك ذلك ونؤمن بذلك، ونتواصل مع هذا المكون تواصل الأصدقاء، تواصل المتعاونين. لدينا شخصيات أنا أيضا أعتز بصداقتهم مثل السيد تجرو وأيضا السيد شيري شنكر وغيرهم أيضا من أصدقائي الذين أتواصل معهم بصفة مستمرة. And of course, within the framework of our organization, we exchange visits with the diverse components of the Indian society. And we know that India is a Hindu majority country, even though the constitution of India is a secular constitution, and within which it's an umbrella for all the different sects and all the different diversity that are united under this one nation. But we realize the fact that the biggest component of the country is the Hindu component. So thus we engage with them in friendship, and also we have an outreach with them. And in that regard, I would like to point out that I have very strong relationship and a friendship with both Sadhguru and Sri Ravi Shankar, to name a few among many. وهؤلاء الأصدقاء نتعاون معهم، ولدينا مشتركات كبيرة معهم من أجل سلام هذا العالم، من أجل أن تسود المحبة لهذا العالم، من أجل أن نزرع الوعي في هذا العالم بأن الاختلاف والتنوع هو أمر طبيعي لا يجب أن يؤثر على محبتنا لبعض، لا يجب أن يؤثر على سلامنا ولا على وئام مجتمعاتنا الوطنية حول العالم. And with those people that I have mentioned, we have many common values, and we have this common mission to promote peace and stability in this world and its national societies, and to convey to the rest of the world that the diversity and differences is a very natural part of our life. وندرك أيضا أن المكون الإسلامي في جمهورية الهند مكون يعتز بوطنيته، يعتز بوطن الهند، ندرك ذلك، وندرك أيضا أنه يعتز بدستورها الهندي ويعمل على تطبيق هذا الدستور بالتعاون أيضا مع حكومته. هنا الوعي الديني، الوعي الديني يجب أن يكون أداة تعزيز للتعايش. الوعي الديني الحقيقي يجب أن يكون أداة للتسامح، يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي مؤطرة
التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. And we know that the Muslim component in the Indian society is also very important component, and it's an Muslim components in the Indian society. They are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. And here, the religious awareness plays a very crucial role. It should be taken, the religious awareness, as a tool for coexistence, as a tool to promote tolerance, as a tool for cooperation, and as a tool for enrichment to further the cooperation between the different elements of the society. نعم، نتواصل مع الجميع من أجل هذه الأهداف المشتركة. نتواصل مع شركائنا في جمهورية الهند، ونحن من القديم في عالمنا الإسلامي نسمع عن الحكمة الهندية، ونعلم أنها صنعت وعملت الكثير من أجل الإنسانية. نتواصل مع هذه الحكمة، نتواصل مع حكماء الهند، ونحن نعلم أن هذا التعايش الذي يتطلع إليه الجميع من خلال هذا التنوع هو هدف مشترك، هو هدف مشترك لكافة التنوع، ليس فقط في تنوعنا الذي يهمنا في مكوننا الذي نتحدث عنه الآن، إنما يهمنا أيضا حول العالم. التعايش العالمي يهم الجميع، يهم محبي الخير. نعم، يحرص كل محبي الخير حول العالم على هذا التعايش، وندرك بأن المكون الهندي بمختلف بمختلف هوياته، هذا التنوع قادر على أن يقدم للجميع نموذجا رائعا للتعايش. التعايش لا شك أنه مطلب إنساني، ولكننا نتحدث عن تعايش واقع. نحن نقدر الخطوات التي تعمل من أجل هذا التعايش، هذا التعايش الذي مع الأسف في عالمنا أصبح يتراجع بعض الشيء حول العالم، ولكننا عندما نتحدث عن الحكمة الهندية، نتحدث عن الدستور الهندي، نتحدث عن مقومات، عن دعائم مهمة جدا لصناعة وإبقاء هذا التعايش ماثلا على الواقع. Yes, of course, we reach out with the different components and diversity for the common objectives that we share. We have heard a lot about the Indian wisdom, and we know that this Indian wisdom has contributed a lot to humanity. We know that we have a common objective of coexisting peacefully together. We know that here coexistence is very important, but we know that around the world it's very important that we also work on promoting stability and harmony all over the world. We know that the Indian components, with all its diversity, is a great model for coexistence, not only in just mere words, but also on the ground. And we appreciate all the efforts and steps taken in this regard. But we also aware of the fact that around the world we see that there is negative trends in coexistence around the world. And here we have to take benefit from the common values that we share together and work further on strengthening them. ولذلك عالمنا بحاجة إلى خطوات عملية. الخطوات العملية هي التي تفيد وتنفع الناس. نتحدث هنا في جمهورية الهند مع عدد من المكونات، واستمعنا إلى أيضا المكون الإسلامي، وقلت قبل قليل بأنه فخور بأنه ينتمي إلى بلده كمواطن هندي، ويفتخر أيضا بدستوره ويحمي هذا الدستور، وأيضا يفتخر بأخوته في المواطنة من جميع الهويات الأخرى ولا سيما التنوع الديني. هو يعتز
بزمالته الوطنية، بأخوته الوطنية مع تنوعه الديني. هذا هو الوعي الحقيقي والذي يمثل الإسلام. نعم، التنوع كما قلت قبل قليل بأنه أمر حتمي من طبيعة هذه الحياة، لكن هذا التنوع يعزز من دعمنا لوطننا، يعزز من دعمنا لوئامنا، يعزز من سلام عالمنا. نريد في هذا العالم ككل أن تكون هذه المفاهيم حاضرة لدى الجميع. الوطن هو للجميع والدستور للجميع، وليس هناك شيء أكثر غيابا وأكثر طلبا في هذا العالم من حاجتنا جميعا في هذا العالم ككل إلى المزيد وإلى تعزيز الوعي من أجل صالح الجميع في هذا العالم ككل. Of course, we in our world, we want tangible steps, practical steps to implement all that. Just mere words are not enough. We have talked just moments ago about the different components in the Indian society, and we have been in the past days engaging with them. And I know that the Muslim component of the Indian society, they are, as I said, proud of their constitution and proud of their nation. And they are proud of the brotherhood that they share with the rest of the components of the Indian society. We know that diversity should be taken as a source that promotes more patriotic feelings within the country. We want these attributes and these positive values to be seen all over the world, so that because we know the nation and the constitution is for everyone, is not for just a particular set of groups. So we have to further around the world work on promoting religious awareness among the different components. هناك من يتحدث عن حتمية الصدام والصراع الحضاري. عندما يتحدث عن حتمية الصدام الحضاري بهذه النظرية المتشائمة يجعل ذلك منصبا على أمرين، على الصدام الديني والصدام الثقافي، وهي نظرية متشائمة خاطئة تماما. ولهذا تنبهت الأمم المتحدة إلى خطورة هذه النظرية على عالمنا، وأنشأت منظمة تحالف الحضارات. ولهذا قامت رابطة العالم الإسلامي قبل حوالي شهر في الأمم المتحدة وبدعم من قيادة الأمم المتحدة وبحضور قيادات الأمم المتحدة على إطلاق مبادرة مد الجسور بين الشرق والغرب من أجل التفاهم ومن أجل السلام. نعم، تتحالف الحضارات وتتعاون الحضارات، وكانت منظمة تحالف الحضارات في الأمم المتحدة شريكا لنا في هذه المبادرة. Of course, there is this pessimist theory in the world that says that the clash between civilization is unavoidable. And thus, such a clash depends on two factors. There are the religions and also civilizations. That's why the United Nations been aware to such theories, and they have established an organization, an organ within the United Nations called the Alliance of Civilizations. And that's why the Muslim World League, in cooperation with the United Nations and their leadership, have launched an initiative in this regard from the platform of the United Nations. This initiative is called the Building Bridges Between the East and the West. Yes, we can cooperate together, and yes, we can live in peace together. وكان لنا لقاءات من البارحة حتى اليوم رائعة جدا، ترجمت وعكست ما قلته قبل قليل من الحكمة الهندية. كانت لقاءات مع التنوع، وكانت لقاءات رائعة جدا تجعلنا في تفاؤل مستمر حول هذا التحالف الحضاري بمختلف هوياته، وأيضا على تعزيز المفهوم الوطني. وأنا أقول بأن هذه المكونات الدينية والمكونات الثقافية
بمختلف هوياتها الدينية والثقافية هي من أكبر الدعائم لحماية الدستور. ولا أقول هنا أيضا في الهند، بل وأقول حول العالم، لأن العالم اليوم أصبح يتأثر بعضه ببعض. ولهذا فتعزيز هذا الوئام وتعزيز هذا السلام العالمي يهم كل الدولة. نعم، يهم كل دولة في عالمنا. نحرص جدا على تعزيز هذا الأمر، ولا شك أن تعزيزه يأتي من المراحل الأولى. الأسرة لها دور، التعليم له دور، منصات التأثير الديني لها دور، وهذه مهمة جدا لأنها تحكي حقيقة الوعي. نعم، تحكي الوعي الديني، الوعي الثقافي. Of course, since yesterday, I have engaged in many dialogues and meetings with the different diverse component of the society, and there is a true sense of optimism between them. We work together on promoting patriotic values among all, and as I have said, this diversity is a way and a tool to protect the Constitution, not here just in India, but around the world. We have and we need to work on promoting harmony in all the countries of the world, because we know the world now is very connected and each country influences the other. And we know that the changes such as this can come from an early age. Different components play a role in this. We know education plays a role, we know the family plays a role in promoting such values, and also the platform of influence in the society play a role. ولهذا أؤكد أيضا على أن الخطوات العملية مهمة للغاية. نحن في هذا العالم بحاجة إلى أن نرى آثارا عملية، وعندما نتحدث عن الوعي نتحدث عن الحكمة، نريد أن تكون هذه على أرض الواقع في عالمنا ككل، وليس في دولة وطنية أو 10 دول أو 20 أو 30، إنما في دول العالم ككل. حديثنا من هذه المنصة هو حديث موجه للعالم بأسره، لأن يعلم أن هذه المنصة منصة مؤثرة ودولية ولها حضور مهم جدا. ولهذا أنا أقول وأخاطب العالم بأسره بأن هذا التحالف الحضاري هو تحالف ضروري، ليس خيارا نقبله أو لا نقبله، هو مستقبل، هو تحديد مسار وبإذن الله صناعة مصير. هذا التحالف يحتاج بعضه إلى بعض. نحن في هذا العالم لا يمكن أن يعيش أحد لوحده مطلقا، لا بد له من غيره، وهذا الغير هو إنسان مثله، هو إنسان مثله، لا بد أن يتفاعل معه، لا بد أن يتعاون معه، لا بد أن يتفاهم قبل ذلك معه. ولهذا لا بد من أن نصنع الوعي في عالمنا ككل، أن نصنعه في أطفالنا، لأنهم هم أجيال المستقبل. ما أكثر ما تخطئ نظرية واحدة يتحدث شخص واحد من منطلق ديني أو من منطلق فلسفي أو حتى من مفهوم وطني يعتقد أنه صواب، ولكنه يؤثر في الآخرين بنظرية خاطئة تماما. ولهذا الفرق بين الصواب والخطأ هو النتائج. النتيجة التي يسجلها التاريخ هي التي توضح لنا الفرق بين الخطأ والصواب. Of course, I would like to reiterate again that we need palpable and practical steps on the ground. We want all over the world, not just here in India. It's not enough to have these values in a 10 or 20 or 30 countries, but we want it all over the world.
And from this pulpit, I know this is a very influential and very international pulpit, I would like to address the world that we want to further foster and promote these values. This alliance is a necessity. It is the future, that to have this alliance between us, it is the shaping of our destiny that we need to focus on. It's not something that we can take it or leave it. It has to be done, and we need to further foster this alliance between us. And of course, when we engage with the other, we have to know this other is another human being like us, and we have to foster understanding and cooperation with them. And this fact starts from a very young age, from childhood, because our children, they are our future. There are many such theories that I've talked about. There are many such theories that turn out to be inaccurate. They are formulated based on religious perceptions sometimes, and sometimes from social perceptions. But in the end, what determines a theory, whether it's correct or not, it's the outcome. So we have to do our part in ensuring that we have a better future and better tomorrow for coming generations. في ختام هذا الحديث سأشير إلى أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة محبة للجميع، هي ثقافة متسامحة، هي ثقافة تحب الحوار، هي ثقافة تتميز بالوعي، ثقافة تحترم الدول الوطنية، تحترم خيار الدول الوطنية، تحترم هذه الثقافة، تحترم احترام الدساتير واحترام القوانين ما دمنا نعيش في إطار دول هذه الدساتير وإطار دول هذه القوانين. المسلم متعايش، المسلم يحمل راية السلام، المسلم محب للآخرين، يحب الخير للآخرين. المسلم ليس فقط يحب الخير، بل ويبذل الخير للآخرين. ولهذا الذي يمثل الإسلام هي قيم الإسلام. قيم الإسلام لا يمثل الإسلام أخطاء قد يرتكبها البعض حول العالم باسم الإسلام. الإسلام واضح، الإسلام كتاب مفتوح يقرأه الجميع. الإسلام كما قلت متسامح مع الجميع. الإسلام لديه سماحة دينية، الإسلام لديه انفتاح ديني، الإسلام لديه تعايش مع الجميع. نعم، الإسلام لا يدعو فقط للتعايش، بل ويوجب على المسلم أن يتعايش بسلام مع الجميع. وأيضا عندما يختلف مع الآخرين فإنه يتحاور معهم ويتفاهم معهم. عندما يكون الإنسان بعيدا عن أخيه الإنسان يكون هناك خوف، يكون هناك توجس، وعندما يقترب من بعض تتلاشى كثير من هذه المخاوف، بل قد تتلاشى جميعا. لكن يحصل هناك اختلاف طبيعي للهويات، ولكن يجمع الجميع دستور واحد وقوانين يطبقها الجميع. هذا هو الوعي الذي نتحدث به عن الإسلام كدين، والمسلمون حول العالم يتفهمون ذلك. المسلمون أكثر من 1,800,000,000 مسلم حول العالم يتفهمون هذا. لا يمثل الإسلام نظرية واحدة يتحدث عنها شخص أو مجموعات معينة. الإسلام هو حاضن ومنفتح على الجميع، ويحب السلام وصناعة السلام، ويحب التعاون مع الجميع من أجل وئام الدول الوطنية ومن أجل سلام الدول الوطنية. ونحن نؤكد من رابطتنا، رابطة العالم الإسلامي، أنها منفتحة على الجميع وتقدر على وجه الخصوص ومن هذا المنبر الحكمة الهندية، ونقدر أيضا علاقاتنا مع جميع المكونات والهويات الهندية. Okay. In conclusion, I would like to talk about the Islamic culture. And would like to reiterate that the Islamic culture and Islamic civilization is a civilization that is open to love, open to engaging in dialogue, respecting countries
and the national countries of the national societies of the world. It respects the constitutions and the laws for those who are living under those constitutional laws. They should and must respect these laws. A Muslim person is a person who coexists, is a person who carries the banner of peace. It's a person who loves others, and not just love others, but do all he can to manifest this love on the ground. Islam is not only words, but it's actually something practical. It represented in the brotherhood that is shared among Muslims and others. Islam is an open book for all, and in Islam, the coexistence is not just something that is promoted, but it's something as an obligation among Muslims to practice in their life. And when there are differences, but we understand that these differences should be engaged and engaged in a manner that show respect for the other. When we are far apart from each other, when we are not close to one another, we know that there is room for fear to seep in between us. Thus, we have to work toward bridging these gaps and becoming closer. We know that Muslims, in one country, they are united under the constitution of that country. And there are around the world 1.8 billion Muslims. And these Muslims are not represented by some inaccurate theories, but by the true message of Islam. And they have to work and continue to work on seeking avenues of cooperation with others. And we reiterate at the Muslim World League that we and our organization is open to everyone and open to engage in dialogue with everyone. And we also reiterate our appreciation for the Indian wisdom and the fact, the diversity and the love that we see in this country. Correct. Islam is not just tolerance. Islam is forgiveness. Yeah. The correction is Islam does not only promote tolerance but being forgiving towards others. وأيضا نحب أن نشير إلى أننا خلال جولاتنا حول العالم نشعر بزيارتنا للهند أننا في زيارة لبلد انفتح على هذه الزيارة وأيضا عزز من الأهداف المشتركة التي نؤمن بها جميعا، وأيضا ندرك بأن هذه الزيارة مؤثرة ليس فقط للقاءاتنا البينية فيما بيننا ولأهدافنا المشتركة فقط، بل وأيضا ستكون إن شاء الله ملهمة لغيرنا من دول العالم. ستكون رسالة لمنصات دولية، لمنصات حكومية، منصات أهلية حول العالم للإفادة من هذا الانفتاح الذي نتحدث عنه، انفتاح الحوار، انفتاح التفاهم، انفتاح التفاهم، انفتاح التأكيد على أهمية أن نكون معا من أجلنا، معا من أجل دولنا الوطنية حول العالم، من أجل سلامنا حول العالم. نعم نعمل ليس من أجلنا فقط، بل نعمل من أجل عالمنا أجمع. هذا العالم فيه المليارات من السكان، جميعهم لهم مظلة واحدة. هذه المظلة اسمها الأسرة الإنسانية، اسمها الأخوة الإنسانية. نعم، الإنسان أخو الإنسان، هناك أخ قريب، هناك أخ بعيد، نعم، لكنهم جميعا إخوة وأسرة إنسانية واحدة. الاختلاف بين الجميع كما قلنا، ويقول كل حكيم ويقول كل مصلح، هو أمر طبيعي وهو من طبيعة هذه الحياة. Yes. Through our travels around the world, we see that in our travel to India that here India is very open to our visits to this country, and we share common objectives that we are working together towards promoting them. And we know that whatever we are doing here together is not influential only within this country, but it's influential to all over the world, because this message is an international message for the whole world and could be a source of inspiration
for other countries to be more open to dialogue and more open towards tolerance. Of course, we are together for the sake of our national countries and for the sake of the whole world. After all, all people that are on this planet are one single family, one single human family, and a fraternal family that they share many in common. وسننطلق أيضا من خلال شراكتنا معا إلى العالم لنقول له بأننا يجب أن نعمل معا لتكون أحاديثنا، لتكون نظرياتنا، لتكون آمالنا واقعة ملموسة تصلح في هذا العالم ككل من خلال التحالف الحضاري الذي يجب أن يكون أثرا ملموسا وليس مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات في عالمنا. نعم، لا بد أن يكون أثرا ملموسا. ننطلق من حكمتنا جميعا، ننطلق من هذا التآلف ومن هذا المكون المتنوع أيضا حتى في جمهورية الهند، ننطلق للعالم أجمع لنلهمه بأننا يجب أن نعمل جميعا من أجل هذا العالم. نعم، نعمل جميعا عملا. Through our partnership here, we'll launch towards the world. So it will be a message to the whole world that we are working towards realizing our aspirations and dreams through an alliance of civilization. This alliance is an alliance that should be tangible and not only limited to conferences and speeches. From here, from the Republic of India, we'll launch to send a message to the world of harmony and living together. ولذلك نسمع في هذا العالم حتى في لدى مؤتمرات لمنظمات دولية، لمنظمات حكومية، منظمات أهلية حول العالم، نقول نعم هناك مبادرات رائعة جدا، لكن نحتاج إلى أن نبادر، ليس فقط نحتاج إلى أن تكون هذه المبادرات عملية على أرض الواقع، ونحن جميعا بمختلف تنوعنا قادرون على أن نجعل هذه المبادرات التي يتحدث عنها عالمنا في تلك المنظمات حول العالم أن تكون على أرض الواقع ملموسة. Yes, in our world and from many prominent international organizations hear about very good initiatives, but we want to reiterate to them and assure them that we want this on the ground. We want something tangible, and we know that we are capable of to realize that on the ground. We don't need just initiative. We need to initiate. We don't need just words. We need action. Yes. Yes. شكرا لك. Thank you. Thank you, His Excellency, for your insightful and thought-provoking address. Before I request His Excellency Shri Ajit Dival, National Security Advisor of India, to address us, I will take a moment, ladies and gentlemen, to share a few snippets from his truly inspiring life journey. It is with great honor and privilege that I introduce a true visionary, a strategist, and distinguished statesman of our time, His Excellency Shri Ajit Dival, KC, India's National Security Advisor. His Excellency has served this great nation for more than 5 decades now. He has been making exceptional contribution to the world in the field of peace, harmony, and human development. He is the youngest ever recipient of a police medal for meritorious service in India, and the first ever police officer to receive the highest military honor for gallantry, Kirti Chakra. A true embodiment of excellence, throughout his life. Shri Ajit Dival is the recipient of numerous national and international awards and honorary doctorates.
Shri Doval was instrumental in signing of Mizo Peace Accord that ended the violent insurgency in India's northeastern state of Mizoram. He played a pivotal role in the merger of Sikkim with India in 1970s. Mr. Ajit Dival had a seminal role in restoring peace in Punjab. His role as a successful negotiator and crisis manager for Government of India has become a part of local folklore in India. Mr. Dival has played a key role in bringing peace and normalcy to Kashmir. His unwavering commitment to fostering trust and goodwill across communities in India makes him a national icon. Through his interaction with the common people and as the Honorable Prime Minister's envoy for engagement with the Muslim community, he consistently prioritizes consensus building, diffusing tensions, and resolving challenging situations. His efforts have successfully united people during crucial juncture, like the recent pandemic, Ram Mandir announcement, and unfortunate instances of communal flare-up like the one seen in Delhi in 2020. It was his initiative a few months ago in this very conference hall that a high-level delegation of ulama from Indonesia deliberated with prominent thought leaders from India on crucial issues of our time. Before this, he mentored the World Sufi Forum to bring together diverse voices from more than 30 countries, including Sufi shuyukh, spiritual leaders, scholars, academicians, and masters of Sufism, to provide a platform for exchange of ideas. His initiative of outreach to Indian Muslim community have earned him immense respect and goodwill. Shri Doval's name has become synonymous with integrity and commitment to one's national duty. He has been a motivating force for India's youth to work towards a brighter future, one where India can become the guiding light for the rest of the world in promoting the interest of humanity. I request His Excellency Shri Ajit Dival, National Security Advisor of India, to kindly address us, please. Your Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General, Muslim World League, members of your esteemed delegation, Excellencies, Mr. Siraj Qureshi, Chairman, India Islamic Cultural Center, Dr. Hafizur Rahman, Director of Khusro Foundation, scholars and eminent persons present, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. It is my proud privilege today to welcome His Excellency and convey my most sincere gratitude for accepting our invitation to visit India. It was indeed a treat to listen to him today and to see the visionary thought of a great scholar, a jurist, a person well-versed with Islamic jurisprudence and understanding of the global events. His message is loud and clear that we live in harmony, we live in peace if we would like to protect the future of humanity. Excellency, you as an authentic global voice of moderate Islam and a profound scholar, adored and respected by millions of people around the world. We in this hall were singularly fortunate to have this opportunity of hearing you.
Excellency, your deep understanding of Islam and religions of the world, incessant efforts towards interfaith harmony, courage to persistently lead on the path of reforms is not only contributing to better understanding of Islam and its seminal contribution to humanity, but also preventing extremist and radical ideologies to plague the young minds. In your capacity as Secretary General of the Muslim World League, you have extensively traveled throughout the world and propagated your message of peace, empathy, and coexistence in the most unambiguous and effective way, the way that we heard it today. Your interactions and persuasive articulations have not only brought about a deeper and better understanding of Islam, but also worked as a catalyst in promoting the values of compassion, tolerance, and respect among different faiths and different people. The world in conflict and turmoil today needs it more than ever before. Friends, we are proud of the excellent relations that exist between India and Saudi Arabia, which are rooted in shared cultural heritage, common values, and economic ties. Our leaders share a common vision of the future and had been closely interacting with each other. The enduring profoundness of our historic relationship can be understood from the fact that during Prophet Muhammad's, peace be upon him, time and his marriage with Hazrat Khadija, she had expressed her liking for silk and shawls from Kashmir in India. Excellency, India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages, and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. As I just mentioned, Islam arrived in India in the 7th century during the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and gradually found a new home in this subcontinent. Over the centuries, it developed a unique syncretic tradition. It was kinetic and dynamic. It expanded and integrated. It was reformative, and it was also which enriched the culture of the new land that they have arrived. The deep spiritual content of Hinduism and Islam brought the people together and helped in bringing about a social and intellectual understanding of each other. It gave rise to a distinct and vibrant expression of peace and harmony, notwithstanding the vagaries of political ups and downs. While the historians have focused more on the political events, they have failed to capture this underlying spirit of accommodation, tolerance, and respect, the powerful societal undercurrents that brought the people together and cemented their relations. The Holy Quran
emphasizes the importance of unity and understanding among people from diverse backgrounds. Excellency, you mentioned about the diversity. There is a purpose behind the diversity. That is what the Holy Quran says, that the humans were created and divided into different communities, and the diversity was created among the tribes and people to facilitate mutual acquaintance and recognition. Excellency, you have also, in your speeches, frequently called for civilization rapprochement based on our shared values and common interests to advocate the spirit of justice and universal brotherhood. The philosophy of cooperation and dialogue in Islam has over the centuries merged seamlessly with the ancient Hindu civilizational tradition of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. This thing with which you concluded your talk by telling that the world is one family is ingrained in our spiritual, in our religious books, but more importantly in the psyche of the people, that we consider the entire world as one family. It was not a quick of history, but it was only by being open to accommodating various world views and ideas, interactions and assimilations of various cultures, beliefs and practices, that India emerged as a sanctuary for persecuted people of all faiths from across the world since times immemorial. India welcomed Arab exiles in the court of Raja Dahir of Sindh, Jews, Tibetans, Parsis, Shias, Bangladeshis, Afghans, and many others with open arms. This enduring tradition of accommodation is a testament to India being a deeply rooted, multi-ethnic, multi-religious, and multilingual society which believes and have an abiding faith in the commonality and the unity of all human beings. Swami Vivekananda, in the famous Parliament of World's Religions in Chicago in 1993, had declared, and I quote, I'm proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth." This ethos of acceptance becomes all the more significant vis-a-vis Islam, given that at a time when Islamic golden age was coming to an end with the Mongol capture of Baghdad in 1258, Indian heartland was quietly nurturing a Sufi renaissance with many sages and mystics spreading their message of peace and brotherhood. It was otherwise a time of great tumult in which striking changes in the realms of ideas and beliefs were taking place and were all around the world. The Islamic world had suddenly lost its political heft, but its spiritual and its humane appeal continued to exist as a very powerful force. A new orthodoxy was trying to challenge the Islamic universe of thought, and in the midst of all this, India offered an oasis of stability and peace where yogis and kalandars, the mystical masters, pilgrims, exiles, dissidents from different schools of thoughts found a new home. The close interaction among the people led to cultural fusion. It not only enriched art, literature, architecture, cuisine, technology, etc., but more importantly, created a syncretic consciousness that permeated through common people. The edifice of modern India is built on the principle of equal rights, equal opportunities, and equal responsibilities for all its citizens. The equality is guaranteed by our Constitution and law. This is also a part of our thinking and this thing. We will all strive, and we should try to bring about that convergence where there is equality in all respects amongst all of us. India continues to play its role as a refuge for heterodox ideas with infinite capacity to absorb dissent.
dissent does not mean disintegration. Dissent does not mean necessarily a confrontation. But in this country, because of your thought, because of your idea, no one is under threat. As a proud civilizational state, India believes in promoting tolerance, dialogue and cooperation to deal with the challenges of our time. It was no coincidence that despite having around 200 million Muslims, the involvement of Indian citizens in the global terrorism has been incredibly low. Yet the challenge of extremism and global terrorism compels us not to lower our guards, to preserve the security and stability within our borders and also rise to the security challenges beyond. India has been leading the fight against individuals and organizations who are promoting extremism, narcotics and terrorism. I vividly recall the terrorist attack on the Grand Mosque in Moscow and in Mecca in 1979, and how that incident became a turning point in the way Saudi Arabia looked at itself and the rest of the world. The attack was carried out by a handful of militants who seized the holy mosque and held the hostages for several days. The attack brought the issue of terrorism to the forefront and forced Saudi Arabia to reevaluate its security measures and foreign policy. India has also been a victim of terrorism for many decades. The country has faced numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attacks, which claimed 168 lives. India has actively been working to combat terrorism through various means, including strengthening its security apparatus, enacting new laws, and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. However, in this war against terror, even in the face of grave provocations, India has steadfastly upheld the rule of law, rights of its citizens, and protection of human values and human rights. India is an extremely responsible power, but when the need for a hot pursuit against terrorist heavens was felt, we have gone all out to destroy terrorism in our national interest. Excellency, you have in the past rejected any attempt to associate terrorism with any nationality, civilization, or religion. I think this is the absolutely right approach. Terrorism is not linked to any religion. It is the individuals who get misguided. And probably it is the duty of the spiritualist leaders to see that they can belong to any religion, any faith, any belief system, any political ideology, but anyone who takes the path of violence will have to be countered as effectively and with all the tools that are possible. You have been a strong votary of the need to shun the path of conflict and supported peace. As G20 President, we ideated on slogan for the summit, and I would like to repeat and emphasize it. Our catchword for that was one earth, one family, one future. Either we sail together or we are doomed to sink together. If we have to sail together, we have to cooperate. We have got to bring about that harmony which Her Excellency you so eloquently told. It is only with mutual trust and cooperation amongst nations, civil societies, religious groups and people of the world that security, stability, sustainable development and a dignified life for all citizens and the future citizens, the future generations can be ensured. In the past, some nations might have fought with each other to resolve their differences, but as our Prime Minister says, this is no more an age of war. Future battles for the good of humanity will have to be fought against hunger, poverty, ignorance and want. In today's world, with complex geopolitical challenges confronting us, religion has to become a beckoning light for the humanity to usher into an era of peace and harmony.
We are fortunate, we have got many distinguished religious leaders sitting here from various pursuits and various thoughts, and I do hope that they understand the great responsibility to lead the society in these critical moments. Our differences will have to take a back seat. We will have to resolve them through dialogue and interaction and compromise. And we will have to realize unleash the human potential and make this world a better place to live for us and our coming generations. Excellency, your visit today is an opportunity to deepen the cooperation between our two countries and then explore new avenues for partnership. I am sure that you will enjoy your stay in India and carry fond memories of the place back with you. You mentioned about some institutional arrangement that you should make to carry this message forward. We do look forward for your guidance and help in this matter. India and Saudi Arabia together can probably do a lot, and we need to further strengthen the ties between our two nations. I would once again like to express my thanks and gratitude to you, Your Excellency, for your visit. And I would also like to thank the Islamic Center for organizing this function and the Khusro Foundation for their initiative. And my thanks also to the distinguished guests and spiritual leaders who have graced this occasion. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency, for your enlightening and insightful speech. Your emphasis on the importance of dialogue between civilizations and the vision for a shared future has really inspired us today. Now I request Mr. Sirajuddin Qureshi, Chairman of Khusro Foundation and the President of India Islamic Cultural Center, kindly present a memento and shawl to His Excellency Sheikh Al-Issa as a token of gratitude and appreciation. Shawl, memento. ऐसे करो. Memento, please. Memento. I request Shri Ajit Dival sir to kindly accept a memento from us, memento and shawl from us as our token of heartfelt gratitude. दे दीजिए सर प्लीज. Now I request Sirajuddin Qureshi Sahab to kindly propose a vote of thanks. His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, Secretary General of the Muslim World League and former Minister of Justice, Saudi Arabia. Esteemed His Excellency Shri Ajit Dival Sahab, Kirti Chakra, National Security Advisor of India, distinguished religious and community leaders, academics, valued members of the press, ladies and gentlemen. Of course, it is a great pleasure and personal honor to stand before you as the Chairman of Khusro Foundation and President of India Islamic Culture Center.
having had the opportunity to host such an important event today. I would like to begin by expressing my heartfelt thanks to His Excellency Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa. Your insightful discourse on various relevant issues have not only enlightened us but also touched our hearts very deeply. I wish to extend my gratitude to His Excellency Shri Ajit Dival ji, National Secretary Advisor to the Prime Minister of India, for taking his initiative to invite Excellency Dr. Al-Issa to India and giving us the honor to host him today. You have always been an embodiment of true Indianness, and your commitment to inclusivity, your gestures of engagement and constant outreach to Muslims community in India. We all love you, sir. Ajit Dival Sahab, we all love you. The community particularly has been winning hearts across the nation. Your valuable insights today have made us reflect upon our roles for fostering an environment of harmony and peaceful coexistence. Your dedication towards the security and unity of our nation is truly commendable, and we are all proud of you. A great symbol of you can say nation, Mr. Ajit Dival. My gratitude also extends to all the religious and community leaders, guests accompanying His Excellency Dr. Al-Issa, eminent personalities, ambassadors, vice chancellors of various universities, lawyers, doctors, civil servants, scholars, members of the media, for gracing this occasion. I am very hopeful we can take the insights gained from today's interaction into our everyday lives and strive towards fostering a safe, tolerant and inclusive nation and safe, tolerant and inclusive world. I really am grateful to all of you. Thank you very much, Excellency Al-Issa and Ajit Dival Sahab. May I now request kindly be seated until the chief guest and the guests they leave, and then you are invited for lunch. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thanks brings us to end for today's session. I request everyone to remain seated so that the dignitaries can leave. Your cooperation is greatly appreciated. Please be seated at your place. Thank you very much. Very beautiful boys. أنا أفهم اللغة العربية وأنا لا تتحدث. أنا أفهم اللغة. Please kindly be seated at your place. Our dignitaries are leaving. जहाँ जहाँ भी जिस हॉल में लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी जगह प्लीज बैठे रहेंगे. रास्ते में किसी भी जगह प्लीज फोटो लेने या उसकी प्लीज बी सीटेड फॉर ओनली फ्यू मोमेंट, ओनली हार्डली अ मिनट और फ्यू सेकेंड्स. प्लीज बी सीटेड. Please be seated so dignitaries can leave. And kindly join us for lunch in the IICC lawn. आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान IICC लॉन में हमारे साथ लंच करेंगे. प्लीज.
लंच का इंतज़ाम सामने और पीछे दोनों लॉन में है, सो आराम से इट विल गो स्मूथली, देयर इज एनफ स्पेस, सो आप सब लोग आराम से लंच करके जाएंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच।